Mukti ma'am. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. चलो लंबा लंबा अच्छा फोटो हो रही है क्या? मैं वेट वेट गाइस, हाँ हाँ कोई नहीं। लंबा नहीं आ रहा है, फोन गिरा रही है। What bite? See, I just got a present. Yay! There's a ballerina. This is Shakti, so I'm going to have her around all the time now. No present to me. I know you come in the beginning. I think you start talking about what it was and now. हाँ हम 2 2 3 चलेगा 3 okay start yes first of all happy children's day Happy Children's Day. happy children's day today is the maiden project and that is written by my dad. It's called Bagya Mein Bagawat and produced by my own company, and I have such talented people and I can't believe that right now Mukti Manch ka pehla production ke liye audience mein I had a Shakti and Moni Roy and you guys were laughing, smiling. How did you find the show, first of all? I thought it was brilliant. The fact that you brought so many children together. Ek to managing them is a task. Yeah. And then to actually teach them, and they were all so involved. They meant every word they said. They did the whole show with so much heart, and there was such a beautiful message. Like you guys must have noticed that we were also all very engaged and with the show, the story, and there have been so many. What is it called? So many, not issues, but so many learnings and yearnings that we get to take from this about what Uncle said about deserving something and desiring it. Also, the fact to be non-judgmental, to understand the concept of equality, to be happy, just be happy. And also, I think my biggest learning from this was that आपके पास कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बात हो, उसको बोलने का एक सुंदर तरीका हमेशा होता है. जिस सरलता से और सुंदरता के साथ उन्होंने ये इन सारे टॉपिक्स को छेड़ा और उसको समझाया, that is my biggest learning. How nicely put, how nice the storytelling was. I love it. Was like a storybook, and I loved being in it. Thank you. So proud of her. So proud of her. Mukti. Thank you. So cute. इनको पहले बोलना है अपने प्रोडक्शन इसके बारे में. इसके बारे में. So coming from theatre background, I think I know how difficult is it to put up a production together, especially जैसे मोहन ने बोला कि जिसमें बच्चे हों, because difficult रहता है उनको इतनी सारी लाइनें याद कराना, उनको इतने सारे steps याद कराना, उनको पूरा sequence याद कराना. I think that way Mukti has done a great job. The entire team of Mukti Manch, they have done a great job, especially in the first production itself. I think they were totally bang on. एक भी बच्चा एक भी लाइन नहीं भूला. So और हर एक ने बिल्कुल तरीके से बिल्कुल फ्लो में सब एक सीक्वेंस में चल रहे थे, and I think that was the biggest win of today's first production. And congratulations Brijmohan uncle for पहला ही जो उन्होंने प्रोडक्शन दी है. I think उसी में एक इतना प्यारा thought, and it's always very easy to say कि यार उस इंसान को इतना कुछ मिल गया लाइफ में, but it's very difficult to understand the journey. And जिस तरीके से इतने सिंपल तरीके से समझाया गया है, I think it was really beautiful. Oh, thank you so much. हाँ? Yeah. अपने चाइल्डहुड मेमोरीज इस ओकेजन पे आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी मेमोरीज हैं, बट मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरीज होंगी आई थिंक पिग्गी बैगिंग माय फादर एंड हिम टेलिंग मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज. ये है, और मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव, मैं ज़्यादातर अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके सबकी फ्रेंड्स के जो चिल्ड्रन हैं उनकी सबकी गॉड मदर हूँ. कैसे संभालूंगी? या थैंक यू. But I see her stories and they're like this one's favorite and everyone's kissing Moni like Yeah, they love their Mo Masi and I love them. आपको बच्चे कितने पसंद है? अभी तो बोला मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है. उसी का आंसर था. दूसरों के बच्चे मुझे पसंद आते हैं वैसे. बच्चों के साथ काम करना, सिखाना. एक्चुअली मुक्ति मंच की जो टीम है जिसमें
सृष्टि गौतम और विख्यात गुलाटी एंड तारुक रायना, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी. और बीच में मेरे शोज़ भी थे एंड आई हैड टू गो एंड कम बैक एंड आई थॉट कि एक डिस्कनेक्ट होता है बच्चों के साथ, एक भी नहीं दिन मिलो तो, लेकिन to make them understand rhythm, and I think innately we all have rhythms in us, and we all have emotions. It's just that koi tap kar de ek right age na, so you can be such a beautiful performer. And I'm glad that their journey has been so beautiful. The first day when they came, I was like, what is going to happen? I don't know. I've taken up this project. Ye ho payega ki nahi? But today I'm really proud of them. छोटी आपकी जो बहन है उनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है. बहनें हैं मेरी. सो बचपन में किस तरह की यादें थी उनके साथ और कितना आप लोग मस्ती करते थे, कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो बचपन? एक्चुअली हमारा थिएटर हमारे एक बेडरूम से ही शुरू होता था. तो नीति दीदी ने जितने भी हमारे एक्टिंग डांसिंग के कीड़े हैं उन्होंने ही शुरू किए हैं. शी यूज्ड टू बी दिस आइस क्वीन. हम अपनी रूम में एकदम एसी स्ट्रॉन्ग कर लेते थे एंड शी यूज्ड टू वेयर दिस रजाई और वो तकियों पे बैठकर ऐसे बोलती थी कि इधर मेरे लिए खाना लाओ, ये करो. और मी एंड शक्ति बीच में लगी हमें डर लग रही है. एंड आई रिमेम्बर प्लेइंग एंड रोल प्लेइंग से वी लर्न सो मच. वी डिडंट इवन नो कि वी आर लाइक ऐसे ही मस्ती मस्ती हम कितना कुछ सीख रहे हैं. और नीति दीदी को देखते देखते कितना सीख ले, यहीं खड़ी हूँ. She's our biggest inspiration. Definitely. Yes, so yeah, बचपन की तो बहुत सारी यादें हैं और हमने एक दूसरे के बाल भी नोचे, हमने एक दूसरे को चिल्लाया भी है, पर उतना ही ज़्यादा प्यार भी था. But I love their bond, yeah. The way I think जो इन तीनों का, I think all three, you know, sisters, they All just, four of them. All four. I'm so sorry. All four of them, you know, they inspire us in so many different ways. Not only personal but professional. दोनों तरीके से. मैंने कभी you know siblings में इतना प्यार नहीं देखा है, कभी इतने सबको एक साथ नहीं देखा है. I think it's really amazing to see, especially in this era. They actually prove that family is everything. If you have a great family and great family support, like I don't think they need any best friend. They need anybody else. They're all best friends with each other, whether it's uncle, auntie, Shakti di, I'm saying. Kiti di, Shakti. नहीं. Shakti and वो मोनी मेरी बात कर रही थी. मोनी भी हमारी बहन है. But I really think brothers bond. नाम भी शक्ति था, सोचो नाम भी हाँ, शक्ति है. Shakti. मोनी आपकी फिल्म ब्रह्मास्त्र आ रही है, साथ ही मेड इन चाइना आ रही है, तो कितने एक्साइटेड हो? आपकी दोनों फिल्में आ रही है नेक्स्ट ईयर. बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ और देखते अभी तो बहुत टाइम है, तो जब आ रही होगी तब बात करेंगे. That was amazing. Nervous भी हूँ. इसके अलावा छोटे पर्दे पे भी काफी आपकी ऑडियंस है और वो वेट कर रही है. अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो करना चाहिए. जी बिल्कुल करूँगी. और आई डोंट वांट टू डू समथिंग जो 1 साल 2 साल चले, बट इफ समथिंग इज सीजनल आई वुड लव टू कम इन. टीवी इज होम. आई ऑलवेज से आई एम अ वेरी प्राउड टीवी एक्टर. whatever I am, whatever I have, it's because of TV, and I would love to. There's no coming back. I mean, it's home. तो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले मैं जरूर करना चाहूँगी. अगले सीजन में देख सकते हैं. वो नहीं पता मुझे, वो नहीं पता. थैंक वो यू. सीजनल हुआ तो हो जाएगा. You never know. But honestly, medium does not matter. If you're a true artist, no. I really think that nobody has spoken about TV like this. I have not heard everyone say कि अब शायद नहीं करूँगी because मैं film actress बन गई हूँ. But it's really sweet. Thank you. Thank you. We all. ये क्या है? नारियल आया. वाह, नारियल. Break. This is for real. अभी 7 o'clock का शो है. धीरे से ब्रेक करो. आराम से. Center stage, my mark is here, sir. मार्क दिया हुआ है. Okay. Go for it. गणपति बाप्पा. Shakti is running down का studio Excitement. Thank Good. you. And new beginnings. Thank you so much, everyone. Laddu time सबके लिए laddu. Let's do it, guys. Let's do it. Okay, everyone. I would like you to know that I know celebrities बनने में एक time लगता है, लेकिन जैसे कि थिएटर की शुरुआत, टीवी की शुरुआत, कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होती है. तो सृष्टि गौतम, विख्यात गुलाटी, तारुक रायना. Can I have you guys here? Where is Taruk? Please come. And Taruk, please call somebody. Taruk? Taruk Yes. is eating. So Taruk it's or Shahrukh because Khan? of Taruk's priorities are sorted, he's eating. इन्होंने बच्चों को संभाला है, उनको पाला है, पोसा है, डांटा है, सब कुछ किया है. And it means a lot to spend even
attention लेके दिखाओ. बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है. And you guys have done that. And you guys have done me so proud. I love it. Whoa! No, but I really have to say this. If we could have asked for a leader, I think in my life I've never had a better Never had a leader. better leader than Mukti. Oh my We've done a lot of shows, but never such a great leader. We've never met in that. She didn't pay us to say this. हमारा लीडर कैसा हो? मुक्ति मोहन जैसा हो. हमारा लीडर कैसा हो? मुक्ति मोहन जैसा हो. So यार you're मैंने नारा मिस कर दिया. तारक रायना. so please say something about your first show. Aha. You guys saw it. So, Yes. it's been a very special journey over the last month or so. I am the last person to join this. Yeah, literally right now. This trio is already. This is what happened in like a nutshell. And it's been great. The kids have been amazing. They've been so hardworking. It was amazing to work with these amazing people. Basically, everything is amazing. I love the word amazing. And you know, I couldn't have asked for a better team to work with. Honestly, it was such a pleasant surprise. I didn't even know what I was diving into. And before I knew it, I was in the deep end, and I was like, "Ab to nahi." So yeah, that's about it. Super. So sweet. Srishti, you want to say something? Yeah, I think just the journey of what we created, because when we got it, it was just a poem on a piece of paper. With it was just a poem on a piece of paper. So to make this out of that, I think right now we're also just absorbing. ये हमने किया है. अच्छा. Stage पे perform हो रहा है. But they have to do a better show. Yes, that has to be better. But yeah. So like Shashi said, when we got the script, we just had a script, some papers with us, and the children came with such a positive and such, you know, good energy to start the show with, and obviously you saw the end and it was very good, and we are very happy that this started with kids. Mukti Manch started with Thank kids. you. And Mukti Manch wants. Okay, do you want to say something about my team?